To get to the district of Morena in Madhya Pradesh from the national capital of Delhi, you first cross the borders of two other states, Uttar Pradesh and Rajasthan. As we drive on the swish multi-lane Agra Super Expressway, we cannot help but think of all those men, women and children who have walked this very highway on foot, sometimes barefoot. On roads like this one and others across India, we have met migrant workers. They have been cumin and potato farm labor, factory staff, hotel help, construction site workers, walking these roads in search of home. And we have met so many, so often in the last month that we have lost count. Sure enough, even today on the way to Morena, we see this, the images that now define India's new normal. On stopping to ask, we discover these men are on an 1100-kilometer journey by bicycle from Panipat in Haryana to Aurangabad in Bihar. They are blanket weavers who, like everyone else, are trying to escape the spectre of starvation and hunger. They left their place of work with biscuits and water, but even that has run out. At this moment, they have covered a little over 200 kilometers, but they still have 900 more to go. पैसे भी नहीं है, लाला देगा भी नहीं, तो इसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं, क्या करें। तो ये नहीं है कि आप वैसे ही घर जाना चाहते हैं, आप कहते हैं बिल्कुल जैसे कहते हैं जिंदा रहने की बात आ गई। भोजन भी नहीं दे रहा था लाला, पैसे भी नहीं दे रहा था और खाना भी नहीं। पैसा तो लाला दिया ही नहीं बाबू। और भोजन तो जो बच रहा था वो खा रहे थे, अब खत्म हो गया था, क्या करेंगे। अब आप मुझे बताइए आगे कितने दिन लगेंगे साइकिल में पहुंचने में। अभी कम से कम 6 दिन लग जाएगा, 5-6 दिन। तो आप खाने के बिना कैसे करेंगे। वो है जो बचा है वो लेकर खाते पीते जाएंगे, और क्या करेंगे। बिस्किट और पानी। This is exactly how hundreds of thousands of Indians have struggled before them in the period of the lockdown. And today we are headed to Morena to meet the family of one such man whose journey home was cruelly interrupted 80 kilometers short of his destination in the city famous for its historic monument of love. भैया थे सबसे अच्छे, जो हमेशा सजेशन देते थे हर चीज पे। कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि हम यहाँ का एटमॉस्फेयर हम भी नहीं जानते कि कैसा वातावरण है यहाँ का। This is Pinky, the younger sister of 38-year-old Ranveer Singh, a teacher in the village school with a BSc degree and the now aborted dream of starting her own school. One of the reasons that Ranveer Singh left to work in the city is because he needed the money to repay loans that the family had taken to spend on her education and wedding. कर्जा किस चीज़ का था? कर्जा मेरी शादी पे लिया था और हमको पढ़ाया इंग्लिश मीडियम पे, पर पापा ने कभी वो इकट्ठा करके नहीं रखा। आपने कब तक पढ़ाई की? मैंने बीएससी कर लिए, बीएड यहाँ ससुराल से की है। बहुत अच्छी बात है। तो क्या सपना अपने लिए देखा था? सपना तो यही देखा था कि स्कूल खोलूँगी। भैया भी इसके लिए तैयार थे, पर जगह नहीं थी स्कूल खोलने के लिए और उसके लिए पैसा चाहिए। जगह के लिए भैया ने बोला था कि आप देख लो, कहीं जगह मिल जाए तो मैं स्कूल खुलवाने की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। To reach Ranveer Singh's village in Ambah, it takes us more than 5 hours to cover the 302 kilometers distance from Delhi. We drive past the Savalgarh fort and drive through the Chambal ravines, once infamous for their dacoits. Soon the town of Morena gives way to dust-filled tracks and incomplete roadworks. Imagine Ranveer Singh walked this entire route. He almost made it, but then he did not. As he hit the milestone of Agra, he had a heart attack and died. This was one of his last calls home. We weave our way through fields and narrow alleys to meet Ranveer Singh's family. In the courtyard of their small home, his wife Mamta breaks down, desolate and almost incoherent in her grief and loss. आज आप कैसे गुजारा कर रही हैं? मैं देख रही हूँ आपका हाथ भी थोड़ा कांप रहा है, आप घबराई हुई हैं, आप कैसे गुजारा करेंगी? गुजारा हुई तो बच्चे को कैसे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बच्चे को कैसे पालूं मैं। घबराई हुई है ना?
मैं देख रही हूँ कि आपका हाथ यहाँ कांप रहा है और कोरोना का टाइम है। मैं आपको हाथ पकड़ना चाहती हूँ और आपको मैं हाथ में नहीं पकड़ सकती क्योंकि आजकल छूना नहीं चाहिए ना। बताओ मन में क्या है? मन में क्या, बच्चे को पढ़ाऊँ कैसे, खर्चा कैसे चलाऊँ, घर कैसे गुजारूँ, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। Ranveer's 20-year-old daughter Deepa does not say much. She seems still paralyzed by the loss of her father. The other two children are too young to understand what has happened. The youngest has polio. She was the apple of her father's eye. Ranveer's last call was to his sister, Pinky. अच्छा, फिर भैया से जब बात हुई क्या हुआ? भैया ने तो यही बताया कि मेरे जो साथी थे वो गाड़ी पकड़ के चले गए, मैं अकेला रह गया हूँ। तो फिर मैं घबरा गई कि भैया आप अकेले कैसे आ रहे हो, दिल्ली से आना यहाँ इम्पॉसिबल, इतनी दूर। तो वो अकेले पड़ गए? अकेले रह गए थे फरीदाबाद पे 8:23 पे। तो छोटे भाई ने बात किया, कि दीदी रुक जा, मैं बात करता हूँ। तो उसने बात की, कि दीदी, उसने भी यही बोला, भैया आप पागल हो गए हो, जो इतनी दूर से पैदल चल के आ रहे हो, लॉकडाउन हुआ है तो क्या हो गया, आप वहीं रुक जाते। तो मतलब उनके जो रूम पे साथी थे वो सब निकल गया है, अब वो अकेले, तो बर्डन सारा उन पे। और फिर वहाँ से उसने भी शायद मना कर दिया है जहाँ पे भैया काम करते थे कि अब आगे काम करने की संभावना नहीं है, तो इस वजह से वो भी आ गए। फिर मैं सो गई हूँ टैबलेट खा के। मैंने इसके बाद मेरी दीदी से भी बताई, मैंने अपनी ननद को, सिस्टर इन लॉ को, कि दीदी मैं कि भैया मेरे पैदल आ रहे हैं, दीदी मेरा मन कोई घबरा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कितनी दूर। तो उन्होंने भी मुझे राह दी कि बेटा ऐसी बात नहीं है, बहुत सी जनता आ रही पैदल पैदल, तो उसमें कोई टेंशन नहीं हो, जगह जगह सुविधा है खाने पीने के लिए। तो फिर मैं बस टैबलेट खा के मैं भी सो गई हूँ। फिर सुबह 5 बजे मैं ही जगती हूँ सबसे पहले घर पे अपने। तो 5 बजे जगी हूँ, तो डायरेक्ट चार्जिंग पे फ़ोन लगाने से पहले भैया को मैंने कॉल किया है। तो भैया को कॉल किया तो सुबह भैया से मैंने पूछा, भैया कहाँ आ गए? तो बोले कि आगरा आ गया हूँ। फिर आगरा आ गए तो उन्होंने बोला, पिंकी मेरे को चेस्ट में दर्द हो रहा है, मैं लेटना चाहता हूँ। तो फिर मैंने ये भी, उन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन पे लेटा हूँ। आखिरी बात आप ही की हुई? हाँ, मैंने ही की और मैंने ही सबको इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने आपको क्या कहा? भैया के आखिरी वर्ड्स क्या थे? आप यही वर्ड्स थे कि बेटा मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है। और इतनी खुशनसीब मैं भी हूँ कि भैया ने मुझे ही फ़ोन किया, पर उन्होंने पूरा नहीं बताया कि मैं क्या करूँ, कि जिम्मेदारी दे के गए मुझे कि क्या कहना था उनको, वो कुछ नहीं कह पाए। This is the restaurant in Delhi, Khana Khazana, where Ranveer Singh worked before the national lockdown compelled the owner to close it. A monthly salary of 10,000 rupees was critical enough for Ranveer to stay hundreds of kilometers away from home. Actually, Ranveer wanted to join the railways, his sister tells us, showing us these papers. But the family did not have the money needed to make that happen. We have all seen the images of migrant workers, hundreds of thousands of them walking our highways, our expressways on foot, men, women and children, sometimes barefoot. And we have all perhaps at times looked away from these images because the reality of them makes us too uncomfortable. Or we have treated them as one abstract mass and forgotten that behind this phrase migrant workers are individual struggles, are stories of individual loss, tragedy and hardship. And sometimes in this journey of the migrant workers, the most difficult thing has not been the coronavirus, but just the difficulty of the journey itself. And that is what happened to Ranveer Singh, leaving behind today a sister, a wife, 3 children who simply do not know what future lies ahead for them now. Pinky, a determined and strong young woman, is already thinking of what they must do next. Mamta must get a job, she says, of her brother's wife. Pinky says she's ready to support the family in the meantime, but a 5,000 rupee monthly salary will not be enough. The compensation from the state government has helped pay off some part of the 2.5 lakh rupee loan. Even this house that they live in was possible because Ranveer took a loan to build it. Being debt-free is the family's first priority. Till then, even mourning and grief is a luxury. All that remains of Ranveer Singh now is this mobile phone, and even that, symbolically, is locked, waiting for Ranveer Singh's fingerprint to unlock it. But that will never happen now. Ask Ranveer Singh's son, this vacant stare in his eyes, this silent, tearless look, this says it all.